Okay, perfect. It started. So, I guess for block four, the initial part we did in the first class only, when I shared with you guys the facts about Spanish language of how many people speak Spanish in each country, and what are the benefits of learning Spanish, where does Spanish speaking countries stand in terms of movie making, percentage of people speaking, export, import, and French and Mandarin ke saath where the Spanish stands. I guess we done all this. Then we read a few facts about Spanish language where we talked about Cervantes. We talk about I know Real Academia Española (RAE), the academy which governs the Spanish language and its rules internationally. Then we talked about El Dia E. Then we talked about आई गेस हाँ यही था बस ठीक है इसके अलावा वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट different languages in different countries which have impact on Spanish language and their different dialects. Then flags were there. Then we did this Spanish dialects and variants. So we did this unit 13. So now we'll move to unit 14 where we talk about los ritmos. Okay, where we'll the objective is to know about the music from Spain, Caribbean rhythms, tango, and life and work of Shakira. I hope everyone knows Shakira. If there's anyone who doesn't know Shakira, you should know about her. चलिए let's read. कोई डाउट्स हैं तो पहले वो कॉल करते हैं बिकॉज ये सब तो इंग्लिश में ही है. These are just facts that we'll be learning today. This can be done at home also. Agar if there are doubts, then I would want to answer those doubts because those would be technical and you would need my help. इसमें तो you don't need my help in terms of understanding. There are few points which I'll cover for sure, but basically ये facts ही हैं जो आपको पढ़ने हैं. Yes, Supriya, go ahead. So can you please convert a statement for me? I like to dance. I like to dance. Me Yes. gusta bailar. और Sir, in the आमी book, में गुस्सा bailar. me. Sir, me and may, why they are together? Because both means Mean me. नहीं नहीं both doesn't mean me. Then sir. सच असली आंसर चाहिए या फिर ऐसे ही दे दूं कोई आंसर. नहीं सर, आमी में गुस्टा बाइलार सर ऐसे स्टेटमेंट मतलब आ सबसे पहले वर्ड क्यों यूज किया गया उसके बाद मी और मे साथ में क्यों आया? वेरी नाइस क्वेश्चन. सच बात बता दें फिर. यस सर. थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, मैं बता देता हूँ. आपके सिलेबस में नहीं है और आपको नहीं जानना है वो. बट इफ यू वांट आई कैन टेल यू द एग्जैक्ट ट्रूथ बिहाइंड दिस वर्ब गुस्तार. बता दूं. यस सर. Okay, Tanu writes, sir, I have a question. Some words in Spanish have double alphabets. For example, excellent, difficult, intelligent. How are these words written in Spanish? Are there some rules for writing such words? देखो समझो एवरीथिंग एवरीथिंग तनु डिपेंड्स ऑन द साउंड विच इज देयर. अगर इंटेलिजेंट की आवाज आ रही तो ल की आवाज आ रही तो उसमें सिंगल एल आएगा. स्पेनिश में डबल एल आएगा तो य की आवाज हो जाएगी फर्स्ट. डिफिकल्ट में डबल एफ तो आ ही नहीं सकता स्पेनिश में बिकॉज डबल एफ होता ही नहीं है. इनफैक्ट पीएच भी नहीं होता. आई गेस आई टोल्ड यू. सो एग्जाम्पल इनोवेशन में इंग्लिश में शायद सिंगल एन आता है. नो डबल आता है. इनोवेशन स्पेनिश में डबल है. इनोवासियन. So this is word to word. There's no rule as such, but you have to pay attention on which the sound you need to have there. Sound पे ज़्यादा depend करता है सब कुछ rather than single है double. चलिए I'll tell you the reason, the actual thing behind गुस्तार. थोड़ा सा टफ है. थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे. कईयों को ही आएगा, सबको नहीं आएगा आई गेस, बट ठीक है. I'll give it a try. समझते हैं. हमने ये सीखा कि गुस्तार का मीनिंग क्या है. To like. Yes or no? यस सर. Yes, sir. To Yes. like. बट एक्चुअली में गुस्तार का मीनिंग टू लाइक नहीं है. गुस्तार का मीनिंग है टू प्लीज. होता है. अगर आप अभी गूगल करेंगे तो गुस्तार का पहला मीनिंग आएगा टू लाइक. दूसरा मीनिंग आएगा टू प्लीज. जो इसका एक्चुअल मीनिंग है वो टू प्लीज है. यू मे सर्च इट राइट नाउ एंड टेल मी द रिजल्ट इफ आई एम राइट और आई एम राइट. क्या आया प्लीज बताइए.
सर सर ट्रांसलेशन इंट्रोडक्शन तो में लाइक है सर चैप्टर के इंट्रोडक्शन में ही लिखा है टू प्लीज। कहाँ लिखा है? इज इट? यस आई नेवर सर, सॉ इट। टू बी प्लीजिंग। टू प्लीजिंग और टू प्लीज, ठीक है। अब यस जो एक्चुअल मीनिंग है ना, जैसे आपको मैं बता देता हूँ क्या होता है। जब मैंने लिखा सपोज में गुस्ता चोकोलाते, ठीक है, इसका जो एक्चुअल मीनिंग है, जो लिटरल ट्रांसलेशन है, वो है चॉकलेट प्लीजेस मी। और मी को मे बोलते हैं स्पेनिश में, और जो वर्ब से पहले आता है। आई रिपीट, जो मी वर्ड है इंग्लिश वाला इज एन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन विच कम्स बिफोर द वर्ब। ये इसका एक्चुअल मीनिंग है, चॉकलेट प्लीजेस मी, विच इवेंचुअली मीन्स आई लाइक चॉकलेट। क्लियर? यस और नो? समझ गए? यस सर। अब हम एक लॉजिक लगा सकते हैं कि अगर मैं ये सेंटेंस लेता हूं, इसके दो ही ऑप्शन बन सकते हैं। देयर आर ओनली टू ऑप्शंस पॉसिबल ऑफ दिस सेंटेंस। एक होता है चॉकलेट प्लीजेस मी, एक होता है चॉकलेट्स प्लीज मी। चॉकलेट्स मुझे बहुत खुशी देती है, तो इसका मतलब हो गया आई लाइक, एक मिनट, मे गुस्ता चोकोलाते। वाई गुस्ता? क्योंकि सिंगुलर है। और नीचे वाले का आंसर हो जाएगा मे गुस्तान चोकोलातेस। तो इसमें क्या होता है, जो एक्चुअली में सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, और जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है वो एक्चुअली में सब्जेक्ट बन जाता है। तो इसका एक्चुअल एक्चुअल मीनिंग है, डिराइव्ड मीनिंग नहीं है। एक्चुअल और डिराइव्ड मीनिंग कहाँ से आता है, एग्जांपल समझ लेते हैं एक और। मे जामो सपोज मयंक, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, आई कॉल माई सेल्फ मयंक, विच इवेंचुअली मीन्स माई नेम इज मयंक। समझ गए? यस और नो? यस सर। तो ये यस इसका लिटरल मीनिंग है, आई कॉल माई सेल्फ मयंक। उसका डिराइव्ड मीनिंग है माई नेम इज मयंक। सिमिलरली इसका एक्चुअल मीनिंग है चॉकलेट प्लीजेस मी, और उसका डिराइव्ड मीनिंग है आई लाइक चॉकलेट्स। सिंपल इंग्लिश है इन शॉर्ट, जो यूजेबल इंग्लिश है, जो यूज्ड होती है इंग्लिश। हम कभी ऐसा नहीं बोलते कि ये चॉकलेट मुझे खुशी देती है। हम कभी बोलते हैं? ऐसे नहीं बोलते ना। हम बोलते हैं मुझे चॉकलेट पसंद है, सिंपल। तो दैट्स हाउ स्पेनिश ऑल्सो वर्क्स। उसमें डायरेक्ट बोलते हैं मे गुस्ता चॉकलेट, चॉकलेट प्लीजेस मी। ओके, ये इसका एक्चुअल मीनिंग है इफ यू अंडरस्टैंड डीपली। अब इसमें हम आते हैं कि सुप्रिया का क्वेश्चन था कि आ मी और आती कहां से आ रहा है। यस सुप्रिया, सो नाउ लेट्स आंसर योर क्वेश्चन। आपके क्वेश्चन का आंसर ये है बेटा कि जब मैंने लिखा मे गुस्ता चोकोलाते, तो मतलब हो गया आई लाइक चॉकलेट। बट अगर मुझे ये बोलना है कि ले गुस्ता चोकोलाते, तो मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ पे शी लिखूंगा, मैं यहाँ पे ही लिखूंगा, यहाँ पे मैं यू फॉर्मल लिखूंगा। मुझे नहीं आइडिया है। जब मुझे आइडिया नहीं है तो मुझे आइडिया देना पड़ेगा। और मैं आइडिया कहाँ से दूंगा, यहाँ पे एक वर्ड ऐड करके। और वो वर्ड क्या होगा, या तो मैं आ एल लिखूंगा। आ एल लिखने से ही क्या हो जाएगा, अ बॉय और अ मैन। ही हो गया ना। यस सर। ही लाइक्स चॉकलेट। और अगर मैं यहाँ पे आ एल की जगह आ एशिया कर दूंगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, शी हो जाएगा। शी लाइक्स चॉकलेट। समझ गए? और अगर मैं यहाँ पे आ उस्तेद कर दूंगा, तो मेरे पास मीनिंग क्या हो जाएगा, यू फॉर्मल लाइक चॉकलेट, आपको पसंद है। सर व्हाई आर वी यूजिंग आ? टू यू, टू हिम, टू हर, बिकॉज ले ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है टू हिम, टू हर का, तो वो टू हिम पहले आ एल ही होता है। और जब हम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन लगाते हैं, जब हम प्रोनाउन लगाते हैं जो ले हो जाता है,
तो ले लिखना इंपॉर्टेंट है, आ एल लिखना इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट बाकी सेंटेंसेस में नहीं होता, बट यहाँ पे दोनों ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। तो इंस्टेड ऑफ आ एल यू कैन राइट आ सौरभ ले गुस्ता चोकोलाते, या फिर आ शीनू ले गुस्ता चोकोलाते। तो यहाँ हम कोई भी चीज लिख सकते हैं, किसी का भी नाम लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल आई कैन से आ मिस एस्टूडियांतेस, आ मिस एस्टूडियांतेस les gusta español, मतलब my students like Spanish। so I can write any noun for that matter, वहां पे कोई भी नाउन प्रोनाउन आ सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ मी टी एल ए या उससे जाएगा, नो, यू कैन राइट एनी नेम, यू कैन राइट मल्टीपल नेम्स। So, sir, why do we write it for like myself? Me. बिकॉज Okay. जब हम आ एल आ ये उस में मेंशन कर रहे हैं तो फिर हम आमी भी मेंशन करेंगे ना, तभी तो मैंने बोला कि हम उसको स्किप कर सकते हैं, हम डायरेक्टली बोल सकते हैं मे गुस्ता, कोई इशू नहीं। Okay, sir. एग्जाम्पल अगर मुझे बोलना है आई ईट पिज्जा, तो मैं बोलता हूँ ना कोमो पिज्जा, लेकिन मैं यो कोमो पिज्जा भी बोलता हूँ, दोनों ही ठीक है। अब एल ए या उससे नहीं भी होते तो भी काम चल जाता है, मतलब अगर उनमें ऐसी इशू नहीं आती तो शायद ये होते भी नहीं, बिकॉज कॉन्जुगेशन से पता लग जाता कि कौन सा पर्सन है। बट इन थर्ड पर्सन सिंगुलर प्लूरल वी आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई हु द पर्सन इज, व्हाट नाउन इट इज, सिंगुलर है प्लूरल है मैस्कुलिन है फेमिनिन है, फॉर ऑल दोस कंफ्यूजन टू बी रिमूव्ड वी यूज ऑल दीज इंडिकेटर्स। ये इंडिकेटर ही हो गए ना। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, ये सब जगह जरूरी नहीं है। सपोज मैंने यहाँ पे बोला कि सपोज इफ आई टॉक अबाउट, क्या नाम है जिसका क्वेश्चन था ये लड़की का, बच्चों ने बच्चे, सुप्रिया। सपोज इफ आई टेक एग्जांपल ऑफ सुप्रिया, सपोज इफ आई राइट सुप्रिया एस estudiante de español, that Supriya is a Spanish student। अगर मैं यहाँ लिखूंगा ना ले गुस्ता फ्रांसेस también, she like French also, फिर ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। मुझे यहाँ पे आ या दुआ लिखने की जरूरत नहीं, बिकॉज मुझे पता है कि मैं यहाँ पे ले में सुप्रिया की बात कर रहा हूँ। दिस इज वेरी मच अंडरस्टूड, क्लियर? बिकॉज Yes, sir. तो जब देखो एवरीथिंग इज अबाउट कॉन्टेक्स्ट, इफ आई अंडरस्टैंड कि ये जो लाइन है किसके लिए है, किसके लिए बोली जा रही है, किसने बोली है, क्या मीन करती है, किसको रेफर करती है, इफ ऑल दीज रेफरेंसेस आर क्लियर टू मी, अगर मुझे सारा कॉन्टेक्स्ट परफेक्टली क्लियर है तो मैं ज्यादा कुछ नहीं करूंगा, सिंपल सिंपल लिख दूंगा। ओके Yes, sir. चलिए आगे, मोर क्वेश्चंस, गुड डाउट। Sir, exam postpone till next Oh. notice. कहाँ, मेरे को नहीं पता, आई डोंट नो, ऐसा कुछ आया? Sir, यू आर group आस्किंग दिस, यू आर circular. वांटिंग दिस, और यू कैसा No, no. समझ? Actually, I got an image like circular है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट एवेल्युएशन डिवीजन से। दिखाओ, मींस शेयर अभी राइट नाउ, कैन यू, आर यू अलाउड टू Yeah. शेयर द स्क्रीन? Yes, sir. हम अगर किसी को नहीं मिला तो फिर दे विल बी इन्फॉर्म्ड ना, दे विल प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। सर एक्चुअली ग्रुप में शेयर हुआ था। जैसे ग्रुप में शेयर होता फ्रॉम द अथॉरिटीज ना? आई डोंट नो सर एक्चुअली। अच्छा दिखाओ, एक मिनट, फॉर्मल ग्रुप है, इनफॉर्मल ग्रुप है, क्या है, कहाँ से है सर ये? NSICBC ग्रुप है। ओके I चलो, don't know व्हाटएवर, if it's formal or not, but ओके, हु सेंट दिस, चलो ठीक है देखो, तो एक बार कंफर्म भी कर लूंगा मैं if yes, this sir. is right or not. So what does it say? It's I'm not able to read, it's not readable. सर ये Consequent, ठीक ही लग रहा है। I mean, consequent upon the outburst of infection growth of the new variant coronavirus, that is Omicron, and the weekend curfews in various parts of the country, the December 2021 term end examination of Indira Gandhi National Open University, scheduled to be held from 20th January to 23rd February 2022, will have been postponed till further notification. The next schedule of the examination will be published on the university's website at least 15 days before the commencement of examinations. ओके, तो ठीक है, एक बार मैं कंफर्म कर लूंगा आज। Let's see. सर आई ये डोंट नो, अभी सर हैं, सोनू सर सर ये हैं,
क्लास में नहीं ठीक ही लग रहा है, ठीक ही लग रहा है सर, ऐसे ही होता है सर्कुलर यूनिवर्सिटी का। नहीं, that is fine, but हम what I think is कि अच्छा you have to, okay, this is an obviously offline exam, you have to go to the center and write the paper. यस सर। हाँ, तो आई गेस वो वीकेंड कर्फ्यू की वजह से ही कर दिया, बिकॉज वो एग्जाम शायद सैटरडे को ही होता है, संडे को होता है। So this can be right. So I'll confirm from the institute once and then we'll let you know tomorrow. सर फिर सर इसकी तो सर असाइनमेंट थर्सडे की को था, डेट्स भी ये बढ़ वाला पेपर तो थर्सडे को था, ये वाला 28 को पेपर था नहीं, सर। सारे पेपर हो गए ना उसमें, बोला 20th से लेके 23rd तक जो पेपर थे सारे, या फिर सारे हो गए। सर ऑब्वियस है सर, ओमिक्रॉन देखो ना सारे कैसा कैसे स्प्रेड हो रहा है। सारे ही हो गए होंगे। ठीक है, अभी I'll तो confirm from the institute about the circular being right or not. I guess it must be right. First, second, what I would prefer, I don't know about you guys, कि अगर थोड़ा सा ये shift होता है, तो we should have classes in bit intervals. That's what I feel. यस सर प्लीज, हाँ, ताकि उससे रिवीजन का टाइम मिल जाता है ना सर, बीच में I know, रिवीजन का because इशू suppose जो हमने कल पढ़ा है वो तुमने आज पढ़ा है नहीं पढ़ा मुझे नहीं पता। नहीं पढ़ा होगा सर। हाँ, वो सर नहीं और पढ़ा। हाँ, तो उसका ना फिर कोई फायदा नहीं रहता। दैट्स व्हाट आई आल्सो फील। तो बट I'll talk to the authorities and let you know about this, जो भी पॉसिबिलिटी होगी, कुछ भी हो। तो सर सर एट द असाइनमेंट मोमेंट की आई डेट एम भी फ्री नाउ। बढ़ेगी? यार असाइनमेंट की डेट तो शायद 31 दिसंबर थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सर 15 15 तो जनवरी। वो तो वो भी तो एक्सटेंड हो वो गई भी थी। मेरे यस सर। फिर सर वो भी सर एक्सटेंड होगी मुझे लगता है अभी, और फिर क्योंकि जो सर जो नहीं, अगर जो इस बार एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं वो भी फिर दे पाएंगे, अगर अगर हाँ, तो और क्या असाइनमेंट चाहिए की तुम्हें डेट अगर लाइफ में? एक्सटेंड हो। मेरे को लगता है यस सर, कोरोना यस कोरोना इज वेरी स्टूडेंट फ्रेंडली। जब भी एग्जाम आने लगती है ना, कोरोना आ जाता है। ठीक यस आने सर। लगे। दिस इज सेकेंड हैपनिंग थाउजेंड फ्रॉम केसेस आए लास्ट थे। टू 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 ईयर्स। सबसे पहला सर बोर्ड। यस सर। हाँ, अभी बताइए। यस, गो अहेड। सर खाली असाइनमेंट देने के लिए तो मेल आया था, तो एग्जाम कब है और रजिस्टर कैसे करें उसके बारे में तो कोई मेल ही नहीं आया। उसके बारे में भी मेल आया होगा, आई एम श्योर। आप चेक कीजिए वेबसाइट। हमें वेबसाइट पे चेक करना है, हमें Those who इंडिविजुअल have में। those who have done, please help her out. Can someone please? देखो स्टूडेंट पोर्टल पे जाना, ठीक है, अपना आईडी बनाना वहां पर, एंड आप रजिस्टर कर पाओगे वहां पर। फिर ओके। तो ग्रुप Clear? में मैसेज डाल देना, मैं गाइड कर दूंगा। ओके Okay, good. So I guess the best thing would be कि अगर अगर ये सच है और थोड़ा आगे पोस्टपोन होता है, तो let's have after 2-3 days ऐसा class, so that you get time to study and prepare and ask your doubts and do all the questions from the material that you have got, and more questions that I give you, because मुझे लगता है कि जब मैं क्वेश्चन दे देता हूँ उस दिन, नेक्स्ट डे वो नहीं हो रहा है, I don't know. So we should be justifying it if we are spending time, energy, and money. So let's confirm whatever happens. सर वीकेंड पे क्लासेस हो सकती हैं कि नहीं हो सकती? अब आई डोंट नो। वीकेंड देखो ऑफ ही देखो है। 10 क्लासेस तो आई गेस 10 क्लासेस में मतलब वी नीड 5 वीक्स, और 5 वीक्स मींस अगर हम सैटरडे और संडे दो क्लास भी लें ऐसे, तो फॉर दैट 5 वीक्स के लिए हमें चाहिए अराउंड 1.5 महीना। हाँ, अगर ये पूरा मींस फेब एंड में होता एग्जाम तो पॉसिबल है। यस So सर। today after the class I'll call the university and I'll ask all the questions and raise my concerns. तुम लोगों को कोई कंसर्न है तो बता दो, I'll ask all of them together. अभी तो नहीं है सर। Okay, ठीक है, चलिए let's move ahead. Let's finish it off. कोई doubts है तो please ask more doubts. Sir, will you suggest to give the exam of BSL 002 this semester? यार वो तो depends on your preparation ना. I मेरा तो cannot. आइडिया यही है कि अगर एक्सटेंड हो रहे हैं तो फिर देके काम खत्म करें ना। काम That खत्म totally करने depends. की यहाँ पर मैंने What गेन is the करने pass? Wait, let's see the paper once. एक बार पेपर देखे कैसा टू आता का। है? हाँ। टू का हम्म। PSL 2। फर्स्ट ही कर नहीं 2 का पेपर देख लेते हैं। 1 का तो इजी था उस दिन। यस सर, यस काफी। सर, 1 का तो इजी था। हम दिखाऊं पेपर? वेट। Well, I guess I don't know if I'm allowed to share or not, but I guess by this you can decide better कि where do we stand. We means you guys. सर वैसे सेकंड बुक थोड़ी डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट तो होगी ऑब्वियसली, लेकिन काफी डिफिकल्ट है कि थोड़ी डिफिकल्ट है?
मैं देख लेता हूँ एक बारी, although I've taught but I don't remember now. Okay. Let me check. So I'll show you two papers. मेरे पास दो पेपर हैं, एक दिसंबर 2020 का है और एक जून 19 का है. Which one would you want to see? सर सर दिसंबर 19 बिकॉज सर आपने कल सर 19 का वन I'll दिखाया show था ना. both. Don't worry, I'll show you both. It's okay. ये देखिए, ये कौन सा दिख रहा है अभी आपको? इट्स जून 19 2019. हाँ, तो ये वाला पेपर है. इसमें क्या बोल रहा है? कंप्लीट द टेक्स्ट विद द वर्ब्स इन द फॉर्म इन विद द एडिक्वेट फॉर्म ऑफ वर्ब. आपको वर्ब ब्रैकेट में दी हुई है. ये टोटली पास्ट टेंस में है बिकॉज ये एक बायोग्राफी है किसी की. जो फर्स्ट सेंटेंस है उसमें लिखा है नासियो. नासियो मीन्स रोबर्टो बालियानो वॉज बॉर्न इन चीले इन 1953. तो आपको बाकी की सारी चीजें या तो सिंपल पास्ट टेंस या फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या फिर पास्ट कॉन्टिन्यूस कहते तो इंडेफिनिटो परफेक्ट और imperfecto में फिल करना पड़ेगा. तो these are 10 blanks and 10 marks. First question number 2 में क्या बोलता है हमें? Okay, you have to use imperatives. तो हम imperatives भी पढ़ेंगे 002 में. तो आपको imperatives फिल करने हैं. मतलब आपको किसी को एडवाइस देनी है कि अगर आपके ज्यादा वेट है तो आप क्या करें. अगर आपका मीन्स इफ यू आर टायर्ड ऑफ योर रूटीन व्हाट यू शुड डू. इफ योर बैक इज पेनिंग तो क्या कर सकते हैं. तो दीज आर डिफरेंट. और ये ओपन एंडेड क्वेश्चंस हैं. मींस क्वेश्चन नंबर 2 इज एन ओपन एंडेड. यू कैन राइट एनी आंसर. ऐसा नहीं है कि इसका एक ही आंसर ठीक है, इसके मल्टीपल आंसर ठीक हो सकते हैं. जो आप लिखेंगे वो ठीक हो सकता है. मींस इफ यू डिसाइड टू राइट समथिंग. सपोज इफ फर्स्ट वाले का आंसर क्या हो सकता है? सी 3 kilos de mass. If you have got more kgs, what can you do? You can write ask exercises, do exercise. You can read come menos, eat less. So there are multiple things that you can write. Multiple right answers. एक right answer नहीं है. Clear? फर्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. आई गेस ये तो हम अभी भी कर सकते हैं. आई स्टार से तेनेरी हम चारों वर्ब्स कर चुके हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग. तो ये हम ट्राई कर लेते हैं आज. सपोज करो इवन इफ यू आर एबल टू डू 5 or 6 क्वेश्चन देन यू आर रेडी राइट नाउ. मींस यू हैव अ मंथ टू प्रिपेयर मोर. तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 3 कर सकते हैं. 4 हम अभी कर सकते हैं बिकॉज हमने 4 सिमिलर वर्ब्स किए थे शायद. वर्ड्स I remember we doing simpatico, antipatico, we did serio, we did hablador, we did largo, we did bonito, we did rapido, I guess. तो ये सब adjectives हैं to match opposite adjectives. Then next question number 5 में first question is ser, estar, ai, tener. Next question is que, cuando, como, dondo. ये भी हम कर चुके हैं. Third question ये हमने अभी देखा है कि gustar या prefer, whatever you want to write. अगर नीचे प्रेफियरो लिखा है तो ऊपर भी प्रेफरी वर्ब आएगी. वो कौन सी फॉर्म आएगी दैट यू नीड टू डिसाइड. क्वेश्चन नंबर 4 ये प्रेटेटो परफेक्टो का क्वेश्चन है. नेक्स्ट ओपन एंडेड मींस नॉट ओपन एंडेड मल्टीपल ऑप्शन पॉसिबल. नेक्स्ट अगेन दिस इज रिलेटेड टू लेट मी चेक प्रेजेंट टेंस का क्वेश्चन है. नेक्स्ट preposition question. नेक्स्ट preposition again. नेक्स्ट टाइम मार्कर्स प्रेजेंट परफेक्ट. नेक्स्ट ही हमने कर लिया एस्ता, फ्रियो, मारियादो, तोस और कालोर. बताएंगे आंसर क्या होता है? ये तो लॉजिक का क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 10. अरे कहाँ से फ्री होता है. हाँ से फ्री होता है. देखा मर्यादा क्या होता है? वही आंसर है. ठीक है, होता क्या, मतलब मीनिंग क्या है सर? ये तो तुम मुझे बताओ. पढ़ाया हमने. सर पढ़ा है, मैं तो अभी स्टार्ट किया है एल के लिए. अच्छा, मारियादो एंड मारियादा मींस डिजी. टू बी डिजी, डिजी फील होना, चक्कर आना. चक्कर आना, डिजी मींस. ठीक है. अब इसका एक लॉजिक आप भी लगा सकते हैं कि जो फ्रियो, तोस और कालोर है ना, ये सब नाउन्स हैं. क्या है? नाउन है. और एस्तार के बाद हमेशा एक एडजेक्टिव आता है. एग्जाम्पल आप ये भी लिख सकते हैं. मारियादो, मारियादा ये दोनों एडजेक्टिव है बिकॉज ये मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों में एग्जिस्ट करते हैं. समझ रहे हैं? एग्जाम्पल आल्तो, आल्ता क्या है? दोनों एडजेक्टिव है क्योंकि मैस्कुलिन भी है और फेमिनिन भी है. क्यों लिखा हुआ वहाँ पर? हेलो ओके. सर क्वेश्चन 5 में वो ऑप्शंस में एक्स क्यों है? मतलब ऑप्शंस X- अलाउड नहीं है या फिर है या नहीं? है नहीं, वो खाली है. ठीक है. ठीक है.
Okay, let's move ahead. Sixth question क्या है हमारे पास passage given है. This is in present tense only. Yes, this is in present tense only. फिर ये true false है. ये वाला पेपर निकाल के आप लोग प्रैक्टिस कर लेना. अगर आप 50% अभी ला सकते हैं इस टाइम पे विदाउट डूइंग दिस, 50% तो नहीं, चलो 40% भी आ रहा है, तो आई एम श्योर 70-80% मार्क्स आ जाएंगे वंस यू वी रीड ऑल दीज टॉपिक्स एंड देन यू डू इट. अगेन क्वेश्चन नंबर 7 इज अगेन प्रेजेंट टेंस बेस्ड क्वेश्चन है. ये भी डूएबल है, सारे क्वेश्चन प्रेजेंट टेंस में आते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 टॉक्स अबाउट यू हैव टू राइट 60 वर्ड्स अबाउट व्हाट यू कॉल अबाउट योर इंटरेस्ट एंड व्हाट यू लाइक टू डू, ऐसा कुछ है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 अगेन 60 वर्ड्स लिखने हैं. 10 मार्क्स का है. You have to write that you are going to spend some time on a beach and you have to write for reservation of your hotel. And question number 10 ये है ब्लॉक 8 से. जैसे ब्लॉक 4 स्पेनिश रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, वैसे ही ब्लॉक 8 भी स्पेनिश रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, स्पेनिश और स्पेनिश स्पीकिंग कंट्री रिलेटेड. सर ज्यादा मुश्किल लग नहीं रहा है देखा जाए तो. हाँ, बिना पढ़े अभी तो लग ही रहा है, बट वंस वी ऑल्सो रीड द मेन टॉपिक्स ऑफ ग्रामर तो और इजी लगेगा ना, बिकॉज कुछ तो करिए, कुछ तो सीखोगे ही, ऐसा थोड़ी है कि खाली बैठे रहोगे. सेकंड क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन भी आधा तो हो ही जाएगा, आई एम श्योर. नॉट सो टफ, डूएबल, दैट्स व्हाट आई वुड से. 50 मार्क्स है ना पासिंग, पास तो सारे ही हो जाएंगे. सॉरी, आई डोंट नो, कोई नहीं पढ़ेगा तो नहीं होगा. दिस वाज वन पेपर, लेट्स सी अनदर पेपर. Super fast. Sir, if you will call the university, can you ask if they are extending the date of like exam The form, filling the exam form? एग्जाम फॉर्म की भी डेट पूछनी है, ठीक है. अभी जो सारे क्वेश्चन है ना, एक बार कोई एक बच्चा ऐसे मेरे को मेल कर देना, या फिर चैट में डाल देना, मैं सेम मेल आगे भेज दूंगा. सो दिस इज दिसंबर 2020 का पेपर. अगेन फर्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन पास्ट. ये सिंपल पास्ट टेंस या फिर प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस, दोनों में से वील सी. मीन्स हम लोग जब दोनों टेंस सीखेंगे तो हम इसके डिफरेंसेस भी सीखेंगे, तब हमें समझ में आ जाएगा कौन सा कब यूज करना होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 अगेन इंपेरेटिव बेस्ड क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3 यू हैव टू करेक्ट फाइंड द एरर्स एंड राइट इट. तो ये तो प्रेजेंट टेंस ही है सारे के सारे, एक्सेप्ट फॉर लास्ट वन, ऑल दीज आर प्रेजेंट टेंस. फर्स्ट बताएंगे, फर्स्ट क्या है, मी एस्कुएला एस एन उना सोना सेंट्रिका. सर कौन सा क्वेश्चन? 3 का फर्स्ट, 3 का फर्स्ट बताइए. मी स्कूल बी बताइए, सी बताइए, डी भी बताइए. सर उन Mi उना जो है escuela इसमें es una zona céntrica. हाँ, सर उना सर सिर्फ उन एक उना ही दो होगा. एक साथ दो आर्टिकल्स एक साथ. चलो वो तो वहाँ पे हाँ. एन है, वो उन नहीं, वो एन है. इसका जो जो गलत आंसर भी है, मतलब वो ये है, मी एस्कुएला एस एन उना जोना एसेंट्रिक. आप इसको करेक्ट कीजिए. ओके सर. La zona céntrica. वो ठीक है. ओके, सो आई टेल यू द फर्स्ट आंसर इज, यहाँ पे आना चाहिए एस्ता, because we are talking about the location of the school, that my Yes, school is sir. located in the central zone. Okay, next, Felipe está austriaco y es 27 años. सर What is टेंगो. Austrian? सर टेंगो नहीं आएगा, टीएनए या टेंगो आएगा. ये सब तो आप बताइए. टीएनए. Sir, what is Austriaco? Sir, Austrian. नहीं नहीं, ऑस्ट्रियन नहीं होता है. तो सर मतलब क्या है सर? क्या ऑस्ट्रियाको? हाँ, ऑस्ट्रियन, ऑस्ट्रियन. आई थॉट यू आर सेइंग सर वो ऑस्ट्रेलियन. Philip S. हाँ, तो फर्स्ट इज फिलिप एस ऑस्ट्रियाको y tiene 27 años. Tiene. Why? Because to mention the age, we always tell यस सर. the verb tener. We always use the verb tener. We don't use the verb ser. Clear? यस सर. Next, son la una. Es la una. Is एस song. एस Es la una. Es Es la- la una. सब कुछ S singular. S. Yes. Next, yes. los alumnos son en la clase de español. Están. परफेक्ट. लास्ट वाला वो टेंस बेस्ड है, वहां पे एस्ता मनना की जगह आ जाएगा आ तो मादो या ए तो मादो, डिपेंडिंग
सिस्तो में तो ए तो ठीक है, या फिर आई भी लिख सकते हैं। वो मल्टीपल, जब हम टेंसेस सीखेंगे तो हम उससे रिलेटेड टाइम मार्कर्स भी सीखेंगे, वो उससे रिलेटेड आंसर है। तो इफ यू ऑब्जर्व ये 2 मार्क का एक है, दिस इज 2 मार्क्स ईच। सो इफ यू इवन डू 4 राइट, यू आर स्कोरिंग 8 मार्क्स, फ्री के हैं वो। So then we move to question number 4. Now question number 4 में क्या है, ये सारे डायलॉग्स हैं, इसमें लिखा कि फर्स्ट डायलॉग ये है, तो आपको बाकी के 1 2 3 4 5 6 डायलॉग्स को और ऑर्डर में लगाना है। वंस यू पुट देम इन ऑर्डर, clear, you have to put these in order, easy. Next, then we move to fifth question. We have to choose the right ones. This is object noun based, this is thin air ke burst, past tense, present tense, depending about this, ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, हो जाएगा, this is article based, अगेन मूचो मूचा मूचो मूचास और तांतो वाला है, ये भी हो जाएगा। ठीक है, डुएबल, नॉट टू इजी बट डुएबल। वंस वी रीड थ्रू दैट, पूरा वो पढ़ेंगे ना 002 तो हो जाएगा। ओके, देन वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। ये पूरा का पूरा प्रेजेंट टेंस में है, इफ यू पे अटेंशन, और क्वेश्चन भी प्रेजेंट टेंस में है विद ऑप्शंस, तो अगेन इजी, 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन। और क्या चाहिए, अगेन दिस इज ऑल्सो इन प्रेजेंट टेंस, द क्वेश्चंस आर ऑल्सो इन प्रेजेंट टेंस, बट यू हैव टू राइट द आंसर। ऊपर में ऑप्शन थी, यहाँ लिखने हैं, प्रेजेंट टेंस में ही है। So then it's write an email about to a friend describing a day of your vacation, your holiday को describe करना है एक दिन के, clear, 10 marks, 60 words, doable. Then it says write a brave short text about the famous Spanish festivals and compare them with your festivals. तो कोई भी 2 या 3 लिख देंगे, 20 or 30 words each, so you will reach around 70-80 words. That's what is required. And then question number 10, again very nice question, you have got options, और क्या चाहिए, you've got options. So ये भी जो हम पढ़ेंगे ब्लॉक 8, ये उसमें से ही है, पूरा का पूरा ब्लॉक 8 में से है। ओके, आई डोंट थिंक सो कोई क्वेश्चन बाहर से भी है, सारे क्वेश्चन ब्लॉक 8 में से। So this is it. So I hope now you have some idea of B002, and then you can make a better decision now of whether to appear or not. Clear? Yes, sir. Yes, Perfect. Now let's move to this and let's finish it off. Sir, I have a doubt, sir. Yes, what's the doubt? Sir, El Aldea and Los Aldeas. Is it correct? What? El Aldea and Los Aldea. El Aldea and Los Aldea. Los Aldeanos Aldeas. बोलेंगे। Aldeanos. The villagers ना, Aldea तो हो गया village, गांव, Yes, sir. और Aldeanos हो गया villagers। अब आपको क्या बोलना है? नहीं सर, वही L and Los वाला जो था। Sorry. आपको बोलना क्या सबसे पहले, इस पे डिपेंड करेगा। What do you want to speak? The village and the villages. Wait. सर L and Las का था ना, आपने डिफरेंस करवाया था कल। अच्छा, सॉरी, Las Aldea. Las यहाँ पर Aldeas is fine। हाँ, अरे El Aldea, ठीक है, क्लियर Okay. क्लियर। चलिए आगे, Yes. चलिए लेट्स मूव Sir, अहेड। यस, sir, क्वेश्चन। बोलिए। सर, वेसेस और tiempo, सर वेसेस का मतलब इज टाइम एंड tiempo इज आल्सो टाइम, तो सर नहीं मेरे को नहीं 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 नहीं, वेसेस का मतलब टाइम नहीं होता, वेसेस मतलब होता है बारी, एक बारी, 2 बारी, 3 बारी। एग्जाम्पल, una vez, dos veces, tres veces, ठीक है, एक बार, 2 बार, 3 बार। tiempo मतलब बारी होता इन द सेंस सर चांस, लाइक है once, twice, वो thrice. राइट, ओके So example, una vez means once. Got it? ओके, तो tiempo इज फॉर टाइम एंड जो वेसेस इज फॉर बारी जो आप बोल रहे हो, लाइक वंस ट्वाइस थ्राइस। Exactly, exactly. ओके सर, ओके, गॉट इट, थैंक यू।
Perfect. Can someone go and read this whole thing? Flamenco. Now, flamenco is very much Spanish from Andalusia. If you अगर आपने जिंदगी ना मिलेगी दोबारा देखी है तो जो उसमें वो गाना था where all three of them are singing, so the girl is literally doing flamenco only. Although proper नहीं कर रही है, थोड़ा बहुत उसमें कुछ कुछ ही portions हैं. Yes, please go ahead and read. May I? Yeah, please go ahead. Okay. Although the exact origin of flamenco art is unknown, we do not know that it is a wonderful creation from the union of many different traditions. The music from the gypsies, the popular songs, and the dances of Andalusia, Murcia, and Extremadura, the Arabic rhythms, etc. This art absorbed everything that was artistically interested. But this is true talking not only about flamenco's origin but also on what is happening today when flamenco is incorporating modern music such as rock, pop, salsa, bossa, nova, or blues, as we can wonderfully appreciate in the work of Enrique Morente. Flamenco developed into its definite form during the 18th century and it is made up of four elements: coplas, lyrics, cante, voice, baile, dance, and guitar. Flamenco music styles, called palos, are classified according to the basic rhythmic patterns, its geographic origin, and tempo. There are more than 50 different palos, alegrias, uh, alegrias, tangos, soleras, soliares, soliares, buliares, seguirias, Sagirias tarantas are just some of the palos you can enjoy in flamenco show. You will be amazed of the virtuosity of the guitar players. Artists like Paco de Lucia, Vicente Amigo, or Tomatito are known everywhere. The passion of flamenco singers such as Cameron de la Isla, Enrique Morento, or Carmen Linares, and the movements of flamenco dancers such as Eva La Yerbabuena, Sara Baras, or Joaquin Cortez. Women wear high heels, a rose in the hair, and beautiful dresses with many layers of ruffles in different colors. From the beginning of the 20th century, flamenco is performed all over the world. It is taught in many different countries. There are many academics in Japan and Spain. On 2010, UNESCO declared flamenco as one of the masterpieces of the oral and intangible heritage of humanity. Spanish pop music. Spanish pop music originated from English and the American rock and roll bands of the early 60s. But it was in the 80s with the groups such as Alaska, Radio Futura, or Hombres G when the so-called golden age of pop music happened. Since then, Spanish music has never stopped growing and it is heard today in all Hispanic society. It is difficult to choose one among all the groups and singers as each one of them has its own style and value. Here are some names: Presuntos, Implicados, Jarbe de Palo, Estopa, Ketama in the 90s, El Canto de Loco, La Oreja de Van Gogh, Alex Ubago, David Bisbal, Amaral into 2000. But without any doubt, the most famous singer and the most rewarded and the one that has the greatest influence in Hispanic pop is Alejandro Sanz. To the date, Alejandro Sanz has sold more than 25 million albums around the globe and has won 3 Grammy Awards and 16 Latin Grammy Awards. He has sung with many international musicians such as The Course, Shakira, Kale, 13, Juanes, or Paolo Valesi. Alejandro Sanz was born in Madrid in 1968, although his parents were from Cadiz, Andalusia. He started composing songs and playing the guitar at very early age, but it was in the 1991 with the album Vivendo Desprisa, Living Quickly, when his career started to flourish. The following albums
Si Tu Me Miras, 1993, working with the guitarist Paco de Lucia, who has greatly influenced Alejandro Mas, 1997, El Alma de Aire, 2000, No Es Lo Mismo, 2003, El Tren de los Momentos, 2006, and Paraiso Express, 2009. Some songs such as Corazón Partido, La Tortura with Shakira have achieved outstanding success in Spain, Latin America, and the USA. Now go to the internet to the song which gave him fame in the initial years, Pisande Futre, Fuerte. सर ये सॉन्ग पढ़ना है Okay, perfect. नहीं 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 नहीं. Okay, listen. What I was saying, इसमें ना links हैं. I clicked at one of the link. If you want, I can make you listen in the class. But उससे better हम आगे का पढ़ते हैं. You can listen to these links if you click on the links given there or scan. सर पढ़ूँ आगे हाँ. ओके Okay, wait. Let's do one thing. Let's do one thing. अभी हमारे पास 1 घंटा है ना. ठीक है, पढ़ते हैं. 1 घंटे में तो हो जाएगा सारा. ठीक है. Let's read. Go ahead. Music from the Caribbean. Let us now read about some of the Caribbean rhythms such as salsa, merengue, bachata, and reggaeton. If flamenco is the star of the Spanish music from an international perspective, so is salsa from all Caribbean music. In Spanish, salsa means sauce and refers to the mixture of different ingredients that compose this rich rhythm. Son and guaguanzo, guaguanzo from Cuba, plena and bomba from Puerto Rico, Spanish music, as a style. Mambo. As a style, salsa was born and named in New York City during the 70s. The first salsa band, the first salsa bands were predominantly New uh, New New Yorkers of the Puerto Rican descent, but very soon it became popular in other Latin American countries. Some of the founding salsa artists were Johnny Pacheco, the creator of the Fania All-Stars, Willie Colon, Roberto Roena, or Hector Lavoe. There is a film called El Cantante based on the life and work of the last singer starred by Marc Anthony, one of the today's most popular salsa artists. The instrumentation of salsa is rich in percussion, congas, bongos, timbales, maracas, gyro, etc. The lyrics are usually happy and cheerful, and dancing is lively and sensual. Salsa is normally a partner dance, although it can be danced in groups, as in Rueda de Casino, where groups of couples exchange partners in circles. Today, there are many salsa styles: Cuban salsa, casino, New York style, Los Angeles style, Colombian style, etc. But apart from these different styles, the most important thing is that today there are pubs and places all over the world where you can dance salsa. France, Germany, England, Japan, and India, of course. Uh, Other Caribbean rhythms. Other well-known rhythm of the Caribbean is merengue, the national dance of Dominican Republic. It is perhaps one of the happiest music in the whole American continent and is also one of the easiest dances. There are many legends about how merengue dancing originated. Some think that this dance form comes from slaves who were chained together and used to drag one leg as were working as they were working cutting sugarcane to the beat of the drums. The other places In other places its origin dates back to the days of revolution when villagers welcomed home a wounded hero who achieved victory. Considering his wound, everybody imitated his limp while dancing, dragging one foot. The other Dominican music is bachata, a slow dance with very romantic lyrics, excellent for dancing in pairs.
The genius of these two Dominican rhythms is Juan Luis Guerra, winner of many awards, including 18 Latin Grammy Awards. His songs "Ojalá que llueva café", "La avispas", "La llave de mi corazón", uh, or "El costo de la vida" are known all over the world. But the last American music phenomenon is reggaeton, which originated in Puerto Rico. This style combines the Jamaican reggae, the Trinidadian soca, and dancehall, some bomba and plena from Puerto Rico, and hip hop and rap from the United States. It is a genre dominated by men, and there are many few women that sing reggaeton. Lyrics tend to be aggressive and sexually connoted. In an attempt to avoid censorship, some reggaeton artists prefer to use double meanings in the lyrics. Reggaeton dancing, sexy and passionate, is very popular in clubs and discos worldwide, and especially in Puerto Rico. The reggaeton singer Daddy Yankee has produced many hits such as Gasolina and Lo que Paso Paso. Um, do you recognize these artists? Try to match each picture with a sentence. Daddy Yankee is a reggaeton rapper from Puerto Rico known by his song La Gasolina. Juan Luis Guerra is a Dominican singer, winner of numerous awards including 18 Latin Grammy Awards. The Cuban Celia Cruz was internationally known as Queen of Salsa. Rubén Blades is a Panamanian salsa singer, songwriter, and also a lawyer. The Nuyorican Jennifer Lopez is a female singer who co-stars with Marc Anthony in the film based on Hector Lavoe's life. Music from South America. In the previous section, we have learnt about some of the Caribbean rhythms such as salsa, merengue, bachata, and reggaeton. We hope you have enjoyed listening to the Caribbean music. In the following section, we will learn about South America's favorite famous music and dance, El Tango, El Tango, and we will read about the life and work of Shakira. Tango. If you think Argentinian music, the first thing that will come to your mind is tango. Tango originated in poor and unprivileged areas of Buenos Aires during the 19th century. These neighborhoods were filled with African and European immigrants who used to dance in the street or in the brothels. Tango music is therefore a blend of European, African, and Guaco rhythms. The sensual dance form that was emerging in Argentina was not looked upon kindly by the upper class of Buenos Aires. Only it after became popular in Europe, the wealthy porteños, Buenos Aires citizens, started to give it some recognition. Today, it is danced all over the world and there are many international contests in USA, Japan, Europe on tango dancing. In 2009, UNESCO declared tango one of the masterpieces of intangible heritage of the humanity. Tango music is played with piano, a double bass, a violin, and a bandoneon. The Bandoneon. songs are bandoneon. The songs are composed using a local slang called lunfardo and often express the amorous sorrows of a man blaming woman for his heartaches. Enrique Santos Discépolo, one of the greatest exponents of this music, defined tango as "un pensamiento triste que se baila", a sad thought that is dance. Tango is danced in pairs with slow movements, long steps, and the most important component is passion. One of the most important figures in tango music is Carlos Gardel, who became a symbol in Hollywood. His song "Por una cabeza" was popularized through numerous films like "Scent of a Woman" (1992), where Al Pacino, starring a blind colonel, dances a tango. You may have taken, yeah, Go to the these are the name of the songs. Okay, let's move ahead. Let's move to Shakira now. Very important stuff because इसका question okay. आने के chances रहते हैं.
A renowned South American singer, Shakira. Shakira Isabel Mebarak Ripoll is perhaps one of the most important, most famous Hispanic singers of the movement. Born in Barranquilla, Colombia, and from a Lebanese father and a mother with Spanish roots, Shakira has her in her blood has in her blood the fusion, and fusion is her music: pop and rock, Oriental and Occidental, Spanish and English. She started writing her own songs at the age of 8, and today she has already released 5 albums and won 2 Latin Grammys. Her first album was Magia Magic, composed of songs that she wrote as a child and released when she was a teenager. But the album that gave her huge success was Pies Descalzos, Bare Feet, released when she was 16. She sold almost 44 million copies internationally and toured 2 years performing to audiences worldwide. In order to be even more international, Shakira started writing songs in English. Although she was raised with English rock bands such as Beatles, Nirvana, The Police, or Led Zeppelin, in the beginning it was difficult to create lyrics in a language other than Spanish. But reading English poetry and looking up words in rhyming dictionaries helped her a lot in the new task. Who knows, perhaps one day you will also write poems and songs in Spanish. And go to the internet and listen to Shakira's piece Descalzos, Sueños Blancos, pies de calzo. You will be able to read the lyrics while she's singing. ठीक है, perfect. All those के famous songs ज़्यादा और भी हैं. Waka Waka is one of them. Uh, I guess whenever there's, it's one of the famous English songs. Yes, sir. English songs भी काफी famous. Okay. So now let's read about the arte. उसमें paintings is very important because Spanish painters are world famous, I guess, throughout, and the most biggest, the grandest person out of all these, who was equally good and famous, was Pablo Picasso. So I guess if you have heard his name, when anyone draws so well, we say Picasso आया गया. समझ रहे हो? Means that's the thing Yes, sir. we say Sachin is there for cricket. Pablo Picasso is there for as a painting, you can say. So Yes. some of the world's most renowned artists are from Spain: Diego de Velázquez, Francisco Goya, El Greco, Bartolomé Esteban Murillo, Juan Miro y Dali. तो दाली का नाम है साल्वाडोर दाली. I love him. He is one of the best. If you search his works ना, इसके वर्क सबसे बेस्ट होते हैं साल्वाडोर दाली के. And then we have got Antonio Lopez. Now you may read. So again, very important two people. First was Shakira, and then there's Pablo Picasso, and third is on the right. This is Frida Kahlo. Someone's writing something. Spanish are the best in everything. Very good. Pablo Picasso in art, Pablo Escobar in crime. Yeah, exactly. And football team in the football also. Means I guess they won the World Cup twice. Exactly. So true. But then Spanish people are not too great with economics. If you see Yes, sir. Spanish economics This not is doing the great. basic. Yes, sir. I'll Sir, tell you because I'll tell you the Argentina reason. was bankrupt. Yes, sir. No, I'll tell you the reason. Spanish people, I'm talking about Spain basically right now. Because what happens with means Spain की मैं अगर particularly बात करूँ तो what people there is, I should not say this publicly, but people there are into two things. It's a saying, ऐसा saying है बोलते हैं that when you are in Spain, it's either fiesta or siesta. Okay, so fiesta means Sir, या तो लोग पार्टी करते हैं या फिर या siesta सोते करते हैं रहते या फिर सोते हैं. सोते हैं मतलब आफ्टरनून में सो जाते हैं. मीन्स इफ यू गो टू स्पेन यू विल नॉट फाइंड पीपल जैसे इंडिया में एवरीवन इज लाइक रनिंग लाइक अ रैट रेस गोइंग ऑन. स्पेन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. इट्स वेरी स्लो आउट देयर. इट्स वेरी स्लो भी नहीं मतलब इट्स वेरी रिलैक्सिंग. यू विल फील एट पीस and when you feel at peace you don't run too much. समझ रहे हो? So that's the vibe of Spain. तो जब ऐसा माहौल है between means among the people and the country and that's the culture, then you don't find too many example. You will not find any tech company from Spain, any
$1 billion startup from Spain. Why? Because they are very chilled out people. They are not running behind money. ऐसा Sir, only ठीक है. smugglers are from Spain, if you see. नहीं Sir, स्पेन तो नहीं बोलूंगा, स्पेनिश स्पीकिंग कंट्री से बोल दूंगा, बट स्पेन से करूंगा. सर लैटिन अमेरिका देखो एंड मैड्रिड देखो सर, मोस्टली ड्रग डीलर्स वहीं पर रहते हैं. नहीं ऐसा तो मैं नहीं बोलूंगा. द थिंग वुड बी सब जगह ही है, बस वो थोड़े से ज्यादा फेमस है. यस सर, बोल सकते ओके. हाँ हैं. वो आई में आंख में मतलब पॉइंट में आते हैं. हाँ वो पॉइंट में. Because that's something, because of the way of their life, it's very luxury, very leisure, full of leisure. Because कुछ हो ना हो उनको पार्टी चाहिए ही चाहिए, कुछ हो ना हो उनको रेस्ट चाहिए ही चाहिए, ऐसा मतलब. Because इंडिया में ऐसा नहीं होता. Suppose you won't imagine in France and in Spain and Germany and all the European countries, people said that we are not going to take vaccines. They denied taking vaccines because they said it's our human right that we can say no. इंडिया में ऐसा यस सर, यूरोप में है, काफी लोग ऐसे हैं अभी भी, एंड सो सर जो सर एलजीबीटीक्यू भी डिनाई. वहाँ पे ज्यादा ही है. लैटिन अमेरिका एंड स्पेन का तो नहीं पता, लैटिन अमेरिका का ज्यादा पता. सच में यार, एलजीबीटीक्यू वो बंदा अपने टैटू बनवा लेता है. पियर्सिंग भी कुछ ज्यादा ही होती है उस एरिया में. आई गेस ब्राजील में भी अगर स्पेनिश बोली जाती ना तो मजा आता. आई मीन ब्राजील इज अ वंडरफुल कंट्री विद अमेज़न फॉरेस्ट एंड ऑल दैट. सो आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड कि ब्राजील में भी वैसे बोली जाती है स्पेनिश, लेकिन इतनी नहीं. वहाँ पोर्टुगीज है बेसिकली. लेकिन साउथ अमेरिका में बेसिकली ब्राजील ही सबसे बड़ी कंट्री है. तो शायद अर्जेंटीना है. नहीं, अर्जेंटीना नहीं है, ब्राजील है. पता नहीं, आई गेस ब्राजील काफी बड़ी ब्राजील है, है, मतलब ब्राजील है, ब्राजील. ब्राजील. क्योंकि ब्राजील इंडिया से भी ऊपर आती है. आई मीन इंडिया से भी बड़ी कंट्री है ब्राजील. ओके. बाकी ब्राजील में पोर्टुगीज इसलिए है क्योंकि वहाँ पे पोर्टुगल का इंपीरियलिज्म था. बाकी कंट्रीज में स्पेन का था, इसलिए वहाँ स्पेनिश बोली जाती है. जैसे यहाँ पे इंग्लिश लोगों का था तो इंग्लिश बोली जाती है यहाँ पे. इस वजह से थोड़ा डिफरेंस है. बट फिर भी देखो यार, जो स्पैनिश स्पीकिंग है सारे मतलब यार कुछ अलग टाइप के लोग हैं वो. हाँ ये तो है, चिल्ड आउट लोग हैं ज्यादातर. डाउट नहीं, बॉडी होना स्ट्रक्चर भी चाहिए, अपीयरेंस पे बोल होना भी चाहिए. हाँ होना बॉडी भी चाहिए, स्ट्रक्चर ये एंड तो. अपीयरेंस पे बोल रहा हूँ यार, उन्हें देखो कैसे बन कर. ये भी है. मे बी हम लोग अलग तरीके से रहते तो ऑब्वियसली कल्चरल डिफरेंस की वजह से वो ऐसा Sorry, लगता है. because I guess there's too much network issue today. So what I was talking about, I forgot. So there people are too much into human rights and all this stuff. So they denied wearing mask and they denied uh, means taking vaccines because they said it's our human right that we can deny it also. तो ऐसा काफी वहाँ वो मचा था, काफी issues थे. UN had to interrupt and say to people and plead to people कि आप vaccine ले लो. अभी भी if you see the number of cases in France is too high, but the restrictions are not there at all. मतलब इंडिया में जो 1000 या 2000 केसेस पे restrictions लग रही हैं, वो बाहर के देशों में इतनी restriction नहीं लग रही है. And but the thing is, we are being too much, although we should not discuss any politics, but we are being too much put into bad light. You getting me? Because that's the game of European Yes sir. countries and US for Yes I sir, would say exactly US sir. ऐसा You रहता है. are right sir. हाँ तो but the thing is, but I'll tell you, now you're learning a foreign language, you have to be aware about a lot of things. Because I'll tell you what happens in suppose I've got many teachers, friends, students from Spain and other countries. तो ऐसा कुछ होता है ना. I remember अभी there was this incident in India where जब I guess there was this some mishappening with some girl. Okay, so and there was a planned what do you call exchange program with one of the institutions I know and I work with, and they denied that we are not coming up. The reason is because one of the incident popped up into international media and it went across every country and it Sir, created a bad name. अब देखो, अब मैं so ये नहीं they बोलूंगा have. कि Yes हाँ sir. तो that's So something they I will have. not say कि this is bad or good or this and that, but thing is वहां पे ऐसे cases रोज होते हैं. But the thing is, Yes sir. they are put beneath the ऐसा slip और ऐसा मीन्स पर्दे के पीछे ढक दिया जाता है kind of a thing.
but we being India वायलेंस में and ज्यादा हो जाता है। हाँ तो it Exactly. get lost between the papers ऐसा. अब जैसे example if I talk about US schools, there's lot of gun crime every now and then happening, but it's not exploded to that level that people will stop saying कि हम वहाँ नहीं जा रहे, हम अपने बच्चे को US नहीं भेज रहे. वहाँ हर second day gun crime होता है. Got it? Yes, So sir. that's the thing. Now, so now you have to understand how geopolitical things work, how international relationship works, because now you have to deal with such people. You have to deal with foreigners. You will have to because जिससे आप बात करो, जिससे आप काम करो कंपनी में, वो US में हो सकता है, स्पेन में हो सकता है, फ्रांस में हो सकता है. So you got to prepare yourself. You have to have that knowledge. You should be well informed about all such things. सिर्फ लैंग्वेज बेस Sir, करने they से कुछ नहीं होगा ना. You have to learn a lot of sir, cultural portions also. हाँ जी बताइए. so they have very fixed notions about India, sir. I mean, they only think about India like in the terms of poverty. हाँ हाँ You यार people एक्चुअली are मैंने very बट एक बात poor. समझो ना. You people are very poor. Yes, नो नो sir. मैंने गॉट टू अंडरस्टैंड द And रीजन बिकॉज वी आर पोर्ट्रेइंग दिस. आप समझो इट्स नॉट देयर प्रॉब्लम. अब एग्जांपल आई no, गिव एन sir, it is एग्जांपल. their नहीं problem. Is नहीं sir, नहीं sir, नहीं if नहीं you नहीं look नहीं at नहीं. the documentaries, they only show India the bad points of India. If you नहीं Mayank, you got to show understand one if thing. No, wait. If there are documentaries made by Indians also, they are also made in that taste only. You have to example. Again, this is not a platform to discuss all this, but हम लोगों में भी issues हैं. आप समझो. You got to understand this. ऐसा नहीं yes, है कि उनको वही दिख रहा है जो वो देखना चाहते हैं. नहीं. हमारी साइड से भी things are not that proper that they should be. Example, when I talk about again, suppose if I talk about Pakistan, तो वहां सिर्फ क्या टेररिज्म है? ऐसा नहीं है ना, because that is being yes, shown to sir, us. समझ रहे हो? yes, If I sir. talk about Colombia, क्या वहां सिर्फ ड्रग्स और ये सब चलता है? नहीं. There are other things to the country, but that's the first thing that hit us. समझ रहे हो? तो ऐसे ही इंडिया का भी जो हिटिंग पॉइंट है वो it's not that friendly of नहीं friendly तो मैं नहीं कहूँगा. It's not that pleasant right now because of the media working from Yes, sir. back और वो ऐसा Sir, international funded whatever things are there. सर सर मेरी सर जब कभी भी यूरोपियन से बात हुई उन्होंने यही बोला यू आर पुअर पीपल ये पीपल तो मैं सर उनको यही बोलता हूँ सर वी आर द फोर्थ फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड एंड वी हैव द लार्जेस्ट आर्मी वी आर न्यूक्लियर वही तो नेशन एंड सर ऑल सर दैट यूरोपियंस वो बोलते हैं क्योंकि वो हायर लेवल पर हैं अभी कंपैरेटिवली, ठीक नहीं है। but that's नहीं but you got to हमारी understand इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग अगर आप लैटिन अमेरिका का देखोगे सर, लैटिन अमेरिका सर कर्ज में डूब रखा है पूरा। इवन स्पेन, स्पेन में भी हाँ लोग lot अनएम्प्लॉयड of हैं। नहीं but that's what I'm saying ना. तो क्या होता है वो एक नेशन का ना वो बन जाता है. समझ लो एक नेशन का वो टैग लग जाता है. अब एग्जांपल इफ देयर इज अ प्रेजुडिस टैग विद सपोज विद चाइना कि चाइना गड़बड़ कर रहा है. बट इफ आई सी चाइना, इफ आई वाज अ चाइनीज आई वुड बी प्राउड ऑफ माय कंट्री कि दे आर ग्रोइंग सो फास्ट. बट आई एम एन इंडियन सो आई से कि नहीं यार वो चीटिंग कर रहा है. ऐसा नहीं होता. समझ रहे हो? Things सर don't सर work आई out. हैव अ क्वेश्चन फॉर एवरीवन, व्हाट डू यू थिंक अबाउट फ्रांस? फ्रांस बहुत अच्छा है। But देखो the thing is you're asking someone who has not been there. आप समझो. नहीं सर, स्टिल आपने व्यूज व्यूज तो देखे ही होंगे ना। हाँ व्यूज. हाँ देखो देखो उससे सबका व्यू दिखता है। अलग है बट देन दैट्स अ पॉइंट ऑफ व्यू. एवरीवन इज एंटाइटल्ड टू डार्क देयर साइड पॉइंट देखो ऑफ ना व्यू. सर, हाँ डार्क साइड भी है हर चीज की। वो तो हर एक कंट्री के ना फिर. वही तो सर, हाँ वहाँ तो पर भी फिर दैट्स पॉवर्टी विद है ऑल द हर कंट्रीज. चीज। ऐसा तो आई गेस इंडिया की भी बहुत डार्क साइड है. आई एम श्योर अबाउट इट. Obviously, The history and whatever you talk about it. So that's something that now you have become an समझो you have become an international student because आप एक foreign language सीख रहे हो. So you got to think from all the perspective from all the countries. Because I'll tell you what happens tomorrow if you go to Spain and then you talk about things that you have only heard about Spain. Things won't be that great with you. People won't be that greater with you. Example कोई बाहर से आ रहा आपको आके बोले कि इंडिया में ऐसा ऐसा है तो आप उसको कहोगे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये भी है और वो भी है और ये भी है और वो भी है. So you should be well read and well informed. That's why we are discussing and that's why we are reading culture also. आप समझो. तो हम कल्चर अभी इसके नीचे once we move ना we'll see a lot of similarities with India. यहाँ की मैरिजेस और वहाँ की मैरिजेस, यहाँ का रहने का स्टाइल वहाँ का रहने का स्टाइल. so let's proceed. मेरे ख्याल में नेटवर्क चला गया सर का फिर से आगे अभी तो एक्चुअली शैल यार वी प्रोसीड क्लास का टाइम खत्म होने वाला है, मतलब 45 मिनट्स रह गए हैं। बेटर है खत्म करते हैं, डिस्कशन तो होता रहेगा। सही होता है
अभी यहाँ सर का वेट करें आने का? हाँ हाँ ऑब्वियसली। और क्या करेंगे भाई, वेट करो। वैसे ये लाइन तो अच्छी थी कि मतलब स्पैनिश हर चीज में बेस्ट है, क्राइम से लेकर मतलब पेंटिंग से लेकर क्राइम तक। क्रिएटिविटी में अच्छा है, मतलब क्रिएटिविटी में हम्म, जिसे कह हाँ सकते सच हैं। में काफी क्रिएटिव होते हैं स्पैनिश। पाब्लो एस्कोबार भी बहुत क्रिएटिव था। आई गेस क्रिएटिविटी के लिए रिलैक्स एटमॉस्फेयर चाहिए होता है ना, तो वहाँ पे है ऐसा रिलैक्स एटमॉस्फेयर, तो इस वजह से शायद क्रिएटिविटी है वहाँ पे। टेंशन नहीं है भाई, स्कूल जाना जरूरी नहीं है वहां पर, आराम से घर अच्छा, पे पढ़े रहो, अनपढ़ बने रहो, फर्क नहीं पड़ता उन्हें। वाह। हेलो मयंक। हाँ, हेलो यार, ये बताना असाइनमेंट अभी जमा करना जरूरी है या फिर अगले सेमेस्टर में भी कर सकते हैं? अगले में भी कर सकते हो। मतलब उससे 1-2 महीने पहले? नहीं नहीं, मार्च देखो, जैसे अभी ये दिसंबर का टाइम चल रहा है ना, हाँ कि हाँ असाइनमेंट सबमिट करने के लिए नोटिफिकेशन आ रखा है, सेम वैसे अगले हाँ, सेमेस्टर में भी आएगा, कर मतलब देना चाहो मार्च में तो। आएगा वो? हाँ। तो मतलब क्वेश्चन पेपर ठीक तो अगले। रहेगा, सीन क्या होता है क्वेश्चन ना, पेपर। प्रॉब्लम क्या होती है कि तुम्हें तब तक चेंज हो जाएगा, सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगा जब असाइनमेंट चेंज तुम्हारा। हो जाएगा नेक्स्ट टाइम। अच्छा, असाइनमेंट चेंज हो जाएगा? हाँ, ये वाला नहीं सबमिट होगा, नेक्स्ट टाइम दूसरा होगा, नया आएगा। ये अच्छा जुलाई और जनवरी के लिए था, 2021 तुम के चाहे लिए। एग्जाम अभी दे दो, असाइनमेंट अगला अगर बाद में दोगे ना, तो अच्छा सर्टिफिकेशन असाइनमेंट सबमिट होने के बाद मिलेगा। अच्छा, ठीक है भाई, धन्यवाद। वैसे कितने मेरे टाइम ख्याल का में रीडिंग सर्टिफिकेट स्टार्ट। मिल जाता है एग्जाम के? एक्चुअली हम सब फर्स्ट टाइम ही दे रहे हैं। 20 से 25 दिन में आ जाता है रिजल्ट, मतलब एग्जाम के। आपने दिया है कोई? एक्नॉलेजमेंट मिल मैंने तो वहीं जाएगी, से किया, बीकॉम एमबीए सर्टिफिकेट। सब वहीं से किया। अच्छा, मैंने बीकॉम एमबीए सब वहीं से किया मैंने। ओके, थैंक यू। मतलब ऐसे था ना, अभी डेट निकल अभी गई रीडिंग इसकी, कंटिन्यू थर्टी रखें थोड़ा फर्स्ट सा थी। जब तक। शायद एग्जाम में अपीयर हो सकती है, नहीं हो सकती, क्लियर नहीं है, अगर सबमिट नहीं किया है असाइनमेंट तो। बट अच्छा नेक्स्ट टाइम जमा करके अपीयर हो सकते हो नेक्स्ट में। ठीक है। रीडिंग कहाँ से स्टार्ट करनी थी? करिए। ये पाब्लो पिकासो से करूँ मैं कि कैसे करना है? पाब्लो पिकासो कौन से पेज पे है? अच्छा, 199। 199। यस मैं, आप कर लो, सर आएंगे, सर ज्वाइन कर लेंगे, आप कर लो, इट्स 5:52। करो। ओके ओके। ओके ओके। ये पाब्लो असाइनमेंट पाब्लो पिकासो। जमा करना है। हेलो, क्या चीज़? असाइनमेंट कब तक जमा करना हेलो, है? 31st है शायद, 31st जनवरी तक। अच्छा, थैंक यू। Pablo Picasso. Some of the world's most renowned artists are from the Spain: Diego de Velázquez, Francisco Goya, El Greco, Bartolome Esteban Murillo, Juan Miro, Dali, Antonio Lopez. In fact, many tourists come to Spain attracted by the long artistic traditions of the country. Perhaps the most valued Spanish painter of the 20th century is the
in innovative Pablo Picasso. His long artistic career that lasted 75 years was in constant evolution. The traditional paintings during the first years, the Blue Period affected by the tragic death of his best friend, Cubism, Classicism, Surrealism. At every moment, Picasso knew how to adapt to his creations to the verti- vertiginous technological and cultural events of his time. Picasso was born in 1881 in Malaga, Spain, and it is said that his first words were "pis pis" in an attempt to say lapis, the Spanish word for pencil. At the age of 14, he completed 1 month qualifying examination of the Academy of Fine Arts in Barcelona in just one day, despite being one of the youngest ones. His mother's knew his mother knew from the beginning that he was meant to be an important person, and she used to tell him, "If you become a soldier, you will be a general. If you become a monk, you will end up as a pope." But he chose to be a painter and definitely ended up being one of the most important painters of all times. His famous works are from his cubism epoch. क्यूबिस्मो In fact, क्यूबिज्म कुछ नहीं होता क्यूबिज्म मींस cub, क्यूबिज्म इज इन cubism, हाँ क्यूबिस्ट तो क्यूबिस्मो इसको हम स्पेनिश में बोलते हैं व्हाट हैपेंस हैव एनीवन सीन एनी ऑफ हिज पेंटिंग अच्छा एक तो ये ऐसी पेंटिंग दिख रही है दिस इज पाब्लो पिकासो ऑन द लेफ्ट and this is one of the greatest painting of his. So the name of this painting is Guernica. Wait, let me show इसका नाम. Guernica है 1937 में it was made. What happens is this painting is about the Spanish Civil War. ठीक है? Spanish Civil War जब होता है ना, if you see इस पूरी पेंटिंग में सिर्फ dead लोग हैं, लोग और animals, everything is dead. So he painted what he came across or what he felt during the Civil War. बट ये अभी वहां पे है म्यूजियम ऑफ रेना सोफिया इन मेड्रिड में दिस पेंटिंग इज स्टिल देयर फर्स्ट ऑफ ऑल सेकंड आई नो देयर इज अ स्टोरी आई एम नॉट श्योर इफ इट्स ट्रू और नॉट कि गवर्नमेंट ने इनको रिक्वेस्ट किया कि और ऐसी पेंटिंग्स ना बनाए द रीजन वाज बिकॉज एनीथिंग बैड बिकॉज वो स्पेन के लिए सबसे ज्यादा बुरा समय था काइंड ऑफ अ थिंग सो दे डोंट वांट कि उसकी पेंटिंग बने और वो हमेशा के लिए ऐसा मेमोरी में आ जाए सबकी. So the government requested him not to paint more on this theme. Okay, so this was his painting. Very, very, I know, famous also. I don't know, good or bad, but art hai. ठीक है, let's the read. Trom yes, his most famous work are from his Cubism epoch. In fact, he was a pioneer in challenging the norms of copying nature as it is. On the contrary, he tried fracturing objects and watches them from different perspectives in order to create a new reality. He started this period with Les Demoiselles d'Avignon, depicting five naked prostitutes. But his most known work is Guernica, which is considered as his most powerful political statement as reaction of devastating bombing on the Basque town of Guernica, a town in the north of Spain, by the Nazis during the Spanish Civil War. The painting portrays the tragedies of war and the suffering it inflicts upon individuals, particularly innocent civilians. This work can be seen in Museo Reina Sofia in Madrid. Frida Kahlo. Unlike Picasso, the Mexican artist Frida Kahlo did not always wanted to be a painter. Her artistic career started after a bus accident when she was 18. She spent over a year in bed recovering from fractures to her spine, ribs, and pelvis. She went through more than 30 operations in her lifetimes, and during her convalescence, she began to paint. 4 years later, she married the famous Mexican muralist Diego Rivera, who was 20 years older than she. They had a turbulent relationship filled with infidelities, fight, reconciliation, and sufferings. Frida had a poor health and couldn't have children. During her lifetime, Frida created around 200 paintings related to her experiences in life, physical and emotional pain, and her tempestuous relationship with Diego. Many of these drawings were self-portraits.
Frida used to say that she painted so many self-portraits because I am so often alone, because I am the subject I know best. Some of her best works are La dos Fridas, Mi Nacimiento, o La Columa Rota, Nacimiento. Nacimiento, o La Columa Rota. I'll show you all She these died. paintings. Okay, sir. She Continue. died at the age of She died at the age of 47. 1 year after her death, Rivera gave her house to the Mexican government to become a museum. Today, many people visit Museo Frida Kahlo to contemplate her art. By the way, today her paintings fetch more money than any other female artist in the world. If you want to know more about the life and work of this impressive artist, watch the movie Frida, starring Salma Hayek, which won an Oscar for Best Soundtrack. But let me show you Pablo Picasso's paintings and Frida Kahlo's also. You want to see few? Let me show. So please pay attention. These are few of his paintings. ये वाली है Guernica on the right. This is Guernica. I hope it's visible. Yes. Okay. So I'll explain. ये जो एक उसमें था Five Prostitutes. This is the famous painting. So one of his very good painting is this. This is the Weeping Woman. Again, one of the greatest paintings of his. So abhi I'll show you cubism wali paintings. So if there's anyone who draws or who paints or who is an artist will like to know this. So if you pay attention on this painting, ये पूरी painting cubes से मिलके बनी है. Okay, every block or everything is related to cubes. तो ये क्यूबिज्म है. वो एक तरह से Pablo Picasso was one of the most, I will not say inventor exactly, but he was the one, like he was a very major artist who drew this movement of cubism ahead. Look at this painting. अभी ये देखने में ऐसा लगता है, but just imagine around he was born in, I guess कब नहीं थी, 937 में बनाई थी, somewhere around 90 years ago, ऐसा 70 years ago. That time imagining all this was not that easy. So this is again cubism ki painting. This again is cubism. So they have made a person using cubes. Got it? Cubism. Yes, sir. So all these are cubism painting. So you The should draw cubism in is beautiful. quite a weird dressing sense में ये draw करते थे, जो माना जाता है. Okay. Then we move to Frida Kahlo. I'll show you Frida Kahlo की painting. So Frida Kahlo used to draw about her painting उसकी खुद के बारे में होती थी. Okay, each and every. So ये जो this is one of the paintings, those Fridas नाम की. So if you pay attention and so I'll tell you, she was most of her life never used to keep well. She was hospitalized. She was not in good health most of her life. And then when she married, it was a very toxic relationship. So that also she used to portray through her क्या कहते हैं paintings. So you look at this painting. Okay, so she's drawing this. So one of her paintings is this. So if you pay attention on the right, she looks like a princess, but on the left she has shown her body on ऐसा जैसा वो क्या बोलते हैं hospital में they take it and it's totally bruised. Stretcher. So most of her उसकी सारी paintings अपने बारे में, because she feels that she is the best that she knows, and she's famous for this joined eyebrows. If you can see joined eyebrows, so there are few paintings जिसमें सिर्फ एक ऐसे joined eyebrow बनी हुई है तो वो समझ जाते हैं कि फ्रीदा kahlo है. This is also one of the most so there she talks about her broken backbone, ऐसे बोल सकते हैं. Okay, and then these are the nails that she's showing her pain about. So ये सारी paintings है उसकी, photos नहीं है. Okay, these are not her photos, these are paintings. So you see ऐसे joined eyebrow दिख रही है. So that's her signature thing that she can be recognized by just by this. So this was her picture. This is her actual photo on the right. And then she was married to the muralist. His name is क्या नाम था? Diego Rivera. Again, he was equally famous, but then they did not go along well. Chaliye, let's move ahead and let's read about other things.
Sculpture and architecture. In this section, we will study about artistic work of Spanish architect Antonio Gaudí and the Colombian sculpture artist Fernando Botero. Antoni Gaudí, the most famous architect in Spain is Antoni Gaudí. Thanks to his works, Barcelona today has a unique and original style. Gaudí used to miss many classes when he was studying architecture, but on the contrary, he was always at the library attending lectures about different topics. He believed that the new developments in architecture world depend on social, political, economic conditions rather than on the architecture itself. He didn't gain good grades when finally graduated. The school's headmaster Elias Rogent said, "Who knows if we have a who knows if we have given a diploma to a nutcase or a genius? Time will tell." Hmm. If you if you pay a visit to the city of Barcelona, you won't have any doubts. You will visit Park Güell, a city garden park full of colors modeled after English parks. Observe the undulating wall patterns of the facade of Batlló, or understand why Casa Milia is known as La Pedrera or Stone Pit. His biggest project was construction of Cathedral La Sagrada La Sagrada Familia. Familia. So this is a cathedral which is on the left. I'll show you the pictures. तो ये वाला जो cathedral है, if I'll show you in the picture, you would want to know this. This is one of the most visited places on the earth. ठीक है? सबसे ज्यादा लोग जाते हैं यहाँ पे. स्पेन में तो नंबर 1 पे है ही, in the world as well, because काफी ज्यादा बढ़िया. Let me show. Can you see? ये बिल्डिंग बन रही है 1882 से. कब से बन रही है? 1882 से, और ये अभी तक खत्म नहीं हुई है. दिस इज स्टिल बीइंग कंस्ट्रक्टेड. इफ यू कैन सी, ये दिख रहा है अभी भी यहाँ पे क्रेन्स लगी हुई हैं बड़ी बड़ी. सो ये एक्सपेक्टेड है कि 2026 या 25 में खत्म हो जाएगी, बट देन ड्यू टू कोविड ये अगेन फिर इसको 2 साल एक्सटेंड कर दिया गया. वेरी ब्यूटीफुल, एकदम मिडिल ऑफ द टाउन में है. देखो आसपास देखना भी. आई शो यू फ्यू पिक्चर्स. आसपास इफ यू सी अक्रॉस, ये पूरा टाउन के से बीच में है. ऐसा नहीं कि अलग डेजर्टेड जगह पे है. फर्स्ट, ये अंदर की पिक्चर्स है. इफ यू सी, दिस इज फ्रॉम इनसाइड, एंड इसमें ना ब्रिक यूज नहीं हुई है, ऐसे पूरा ये ऐसे स्टोन से बना कुछ. Very beautiful. If you get time, you can read about it. So there was this original architect of this who died after 1 year of the project, and then Antonio Gaudí took over. और बट इनकी डिजाइनिंग इतनी ज्यादा डिटेल में है. इफ यू सी ना, ये सब वॉल्स हैं, ये सब स्कल्पचर्स बने हुए हैं. इफ यू मींस जूम इन एंड देन सी अच्छे से. वेरी आइकॉनिक प्लेस इन स्पेन. So you should know about it. So if you see this picture, there you can see this is Christ and other people. ऐसा बहुत ज़्यादा डिटेल में है. Each and everything is in too detail. Yeah. So if you see the aerial view, if you want to see, I'll show you the aerial view. That's how it looks like. 1 2 3 4 1 2 3 4. That's how the city of Barcelona looks like. So Barcelona का जो major क्या कहते हैं, can you see the symmetry? ये पूरा symmetry है पूरा. ये पूरा का पूरा टाउन ही है. I mean पूरा city ऐसी है बार्सिलोना की. See this. कहाँ गया? So ये ऐसे chunks बने हुए, blocks kind of a thing. ये बीच में यहाँ बना हुआ. Very nice place if you go. Chaliye, let's move ahead. Let's move a bit faster. Let's finish it today only. Again, then they talk about his last days. His last days were not so good because he became too poor and he started living a very weird life. So people thought that he was a beggar, and then he was hit by a tram. Not a very bad situation. Then we talk about Fernando Botero. Fernando Botero was a sculptor who used to make weird body shaming sculptures. Body shaming means as a different kind of sculptures where some other body part used to be as elaborated.
ठीक है. Then we move to cinema. Cinema, I guess तुम लोग खुद पढ़ना इसमें. But there are two major people in cinema. First is Pedro Almodovar. So Pedro Almodovar can be compared to, ऐसे India में, if I talk about the greatest director who has India's ever produced, is I guess Yash Chopra. So similar kind of a personality there. He has given many super hit movies. ये सब movies का नाम है. You can read and you can watch a few. And he used to tie up with an actor whose name is this guy. This is Antonio Banderas. ये दिख रहा है ये जो यहाँ पे है. So they both, इन दोनों की जोड़ी is like quite famous and always a hit. And other actors may say famous one would be Javier Bardem, is also very famous. He's done quite a good movies there. Now let's move to social and family celebrations. ये थोड़ा important है. Let's read this. Please go ahead. कहाँ पे कौन से? Okay. Social and family celebrations. Birth, death, marriage are principal events of everybody's personal life and also the events that you share with your beloved ones. Birthdays in Spain and Latin America are special days, particularly for children who love to throw parties. As with any celebration, it is a good excuse to get together with family and friends. After having some food, all the guests surround the compleanero, the person who is celebrating. Cumpleaños means birthday. Cumpleaños means जिसका birthday है. Okay, sir. Compleanero. The person who is celebrating his birthday, singing the happy birthday song in Spanish. It goes like this. A funny practice in Spain is the ear pulling. Friends or family members will pull the birthday boy or girl's ear as many times as corresponds to his or her new age. For a Latin American girl, the most important birthday is when she turns 15. This event is called quinceañera. The word quinceañera comes from the Spanish word Quince means 15 and quinceañera. Anera means ऐसा 15 बर्थडे. तो जैसे यूएस में Annuals. स्वीट 16, हाँ, जैसे यूएस में स्वीट 16 मनाया जाता है, वैसे ही स्पेन में, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में, मोस्टली आई गेस कोलंबिया एंड मेक्सिको, there they celebrate quinceañera, where they celebrate birthday to a very lavish kind of a thing, और काफी ज्यादा elaborated celebration होती है, काफी ज्यादा बड़ी. Okay, Okay, means thank you. I guess marriage इससे बड़ी सिर्फ marriage ही होती है in that girl's life, if you talk about the events. Okay, let's move ahead super fast. Yes, Let's go to the weddings. It, अच्छा, वैसे let me check अगर वो इसमें आएगा आज नहीं. Okay, it will come today. Today there is this festival. ये दिख रहा है 6th of Jan. Today is this festival. We'll read about this also. Okay, let's read super fast weddings. yes, sir. It marks a transition. Weddings. Okay, weddings, bodas in Spanish are also important events in Spain and Latin America. Traditionally, the man asks the father of the bride for permission to marry his daughter, and only with his blessing they start all the arrangements. Whole extended family is invited to the celebration, which usually never has less than 200 guests. During the celebration that usually starts late, around 7 p.m., the groom gives the bride 13 coins known as eras, representing his commitment to support her. Nowadays, many brides and groom exchange these coins as a symbol of wealth they will eventually share. After the ceremony, they both walk down the aisle while everybody throws rice and flower petals to the newly married couple. During the banquete de bodas, a wedding feast, the bride and the groom move around from table to table carrying a basket with carrying a basket with small wedding gifts that they personally hand out to each guest, such as sweets, a cigar, or a mini bottle of wine for men, a perfume, or a candle for women. Perhaps it will sound surprising, but most Hispanic countries also celebrate the death. Family and friends gather on 1st and 2nd of November to remember and pray for the friends and family members who have died. The Day of the Dead's Dia de Muertos is particularly celebrated in Mexico, where it is a national holiday. People build altars at homes to honor the departed ones using photographs, sugar skulls, marigolds, and favorite foods and beverages of the deceased. Okay, wait. They Dever, you will want to read also or what is the thing? You're raising your hand. Is everything okay? Okay, so I'll tell you about Day of the Dead. What happens there is, means if I compare with Indian thing, जैसे यहाँ श्राद्ध मनाते हैं. Do you guys know this?
That's the similar thing that is celebrated there. Celebrated only means it's there also, but वहाँ पे they are not sad. It's India में it's a sad thing. Sad तो नहीं कहूँगा, peaceful होता है. But वहाँ पे तो they go to the cemetery, they kind of celebrate. Why we celebrate? Because they feel that we are lucky enough कि वो लोग हमारी life में आए. It's a different way of seeing the things. Okay, so they are not sad those days. They are like they go to the cemetery, they sit there throughout the night and kind of party and music wala scene ही होता है. So that's how they celebrate and they remember their deceased ones. Like Okay, in Coco. right? हाँ, Coco movie इसी के बनी. Exactly. Perfect. Let's move ahead. Let's directly go to this. Now Christmas देख लेते हैं और यहाँ पे सीमांता साना तक. उसके बाद I guess ये तो हमें पता ही है, सैन फेर्मिन हमने मूवी देखी सबने. That's there, and last one is Tomatina. ठीक है. Let's just read this super fast. Christmas वाली celebrations are very important. Let's read them. फिर what we do is I'll share few videos. You can see those videos. उसमें सब celebration आपको अच्छे से दिखाई देगा. You can see all those celebrations. And today is Three Kings Day. Yeah, today is Los Dia de los Reyes Magos. थ्री किंग्स डे बोलते हैं इसको. ऑल्दो सबको ऐसा लगता है कि जो गिफ्ट्स मिलते हैं वो सेंटा क्लॉज देता है, बट दैट्स नॉट राइट. सेंटा क्लॉज गिफ्ट नहीं देता है. गिफ्ट देते हैं लोस थ्रेस रेयोस मागोस, द थ्री किंग्स. ये लोग गिफ्ट देते हैं. लाइक दैट्स द ट्रुथ इज. बट सबको लगता है सेंटा क्लॉज देता है. ऐसा नहीं है. स्पेन में तो नहीं है. ओके, प्लीज लेट्स रीड. Yes. On December 25, all the Hispanic countries celebrate La Navidad, the Christmas, the commemoration of the birth of Jesus Christ. Christmas tree is not as popular as it is in Anglo-Saxon countries, but children prepare a Belin, a nativity scene with tiny figures that represent baby Jesus, Virgin Mary, Saint Joseph, a cow, and a mule, all together sheltered near the manger in barn or cave. In many places, people compete to create the most original and realistic of these scenes, adding little houses, rivers, peasants, animals, etc. On 24th December, the night of the Christmas Eve, Noche Buena in Spanish, people gather to close the Belén and eat a copious meal, taste delicious sweets such as turrón, mazapan, or polvorones, and sing Villancicos means Christmas carols. villancicos, Christmas songs. In countries such as Puerto Rico, a group of people called parranda makes surprise visits to houses late in the night, singing these songs. The host has to open the door, invite the singers to come in, and offer them some beverages and food. Once they have fulfilled their appetite, they will go to a new house. Everybody is happy and cheerful during those days when nobody ever misses tasty food, happy songs, hot drinks, and plenty of fun. The red-dressed Santa Claus, Papa Noel in Spanish, is usually the person who brings gifts to the children in Hispanic countries. They wait for the three kings, Melchor, Gaspar, and Baltasar. It is believed that they read the letters that kids send them asking for specific gifts. They come very silently late at night and leave the gifts close to the pair of shoes of each member of the family. For children, that morning, 6th of January, is their favorite date in the Hispanic calendar, popularly known as Dia de los Reyes Magos. In other important celebrations of the Christian community is the Holy Week, La Semana Santa in Spanish-speaking countries, the week before Easter, Pascua in Spanish, where Jesus' death is commemorated. During these days, there are many processions of passos, realistic sculptures made of wood that represent individual scenes of the events of the Passion or images of the Virgin Mary showing her grief for the torture and killing of her son. One of the most breathtaking things that a visitor can experience in many cities of Spain is the Nazarenos, dressed in a with pointed hood habit and with a pointed hood called capriote that covers entirely their heads, holding long wax candle, Just like sometimes there on the barefoot. picture. पीछे देखोगे हॉबिट है पूरा, सिर्फ आईज दिख रही है और कुछ नहीं दिखेगा. That's how this is. So that's like a march going on. Let's read this one. So अभी जो इसके next पढ़ेंगे, that is very important. It's Why is it called Hispanic? Why is it called?
Hispanic. HISPANIC. बिकॉज ये सिर्फ स्पेनिश नहीं ना, हिस्पैनिक कंट्रीज मतलब जो सारी कंट्रीज जहाँ से स्पेनिश बोली जाती है उसको हम लोग हिस्पैनिक बोलते हैं। जो अभी हम नीचे देखेंगे एग्जाम्पल, इट सेज अपार्ट फ्रॉम दिस रिलीजियस सेलिब्रेशन देयर इज आल्सो कॉमन फेस्टिवल दैट इज सेलिब्रेटेड इन ऑल द हिस्पैनिक कंट्रीज। हिस्पैनिक मतलब जहाँ जहाँ स्पेनिश बोली जाती है उन सारी कंट्रीज को हिस्पैनिक कंट्रीज बोलते हैं। ओके, जैसे जहाँ जहाँ फ्रेंच बोली जाती है वहाँ पे फ्रांकोफोन कंट्रीज बोलते हैं उनको। ठीक है, फ्रेंच नहीं बोल सकते बिकॉज वो फ्रांस हो जाएगा। स्पेनिश मतलब सिर्फ लैंग्वेज नहीं ना, स्पेनिश एक कंट्री भी है जिसका नेशनैलिटी स्पेनिश है। स्पेन का नेशनैलिटी स्पेनिश हो गई ना और लैंग्वेज भी स्पेनिश हो गई, बट बाकी कंट्रीज भी तो हैं, तो उसके लिए देयर इज दिस वर्ड हिस्पैनिक कंट्रीज। तो सबसे इंपॉर्टेंट डे है दिया दे ला हिस्पानिडाद। नाउ दिया दे ला हिस्पानिडाद इज सेलिब्रेटेड ऑन 12th of October। ये कब हुआ था और क्या हुआ था? दिस डे क्रिस्टोफर कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, जहां पे देन द स्पेनिश लैंग्वेज स्टार्टेड स्प्रेडिंग थ्रू। क्लियर? और ये कब होता है? दिस इज ऑन 12th October। ये हुआ था 1492 में। क्लियर? So this is also a very important fact which can be asked in the exam. और इस डे को बोलते हैं दिया लेरा राजा ताम्बिन और दिया de los resistencia indígenas also. And very quite like celebrated day throughout the world, Hispanic countries. Then we have got these 4 festivals. So this is your activity, this is your homework. You do this in homework. 4 descriptions हैं और 4 ऊपर pictures हैं, you have to match. The most important one is the second one that I'll read right now. It says Catalunya remembers the death of Saint George on 23rd of April, Dia de San Jorge or Dia de Sant Jordi, exchanging gifts between colleagues and loved ones. Traditionally, men give women a rose and women give men a book. To celebrate the occasion, El Dia de la Rosa और Dia del Libro, Day of the Book और Day और Rose Day की तरह सेलिब्रेट करते हैं। It is celebrated on 23rd April 1616 से सेलिब्रेट हो रहा है बिकॉज उस दिन सर्वांतेस एंड विलियम शेक्सपियर डाइड ऑन द सेम डे। सो दोनों लैंग्वेजेस के सबसे ग्रेटेस्ट ऑथर्स डाइड ऑन द सेम डे। ऑल्दो सर्वांतेस की जो डेट है वो कभी कभार 22 लिखी मिलेगी आपको कहीं पे, वो बिकॉज उनकी डेट ऑफ डेथ और डेट ऑफ बर्थ दोनों ही थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, बट दे सेलिब्रेटेड ऑन 23rd। ऐसा सेलिब्रेट मतलब दे टेक इट 23rd बिकॉज उस दिन not only these 2 authors, there were 5 other authors who were very famous and used to do a good work. They all passed on the same day if you read about it. And then there are 3 other festivals that you can read on your own. Then San Fermin के बारे में हमें पता ही है, when the bull runs behind the people and they, वैसे ये इंडिया में भी होता है if you know this। जल्लीकट्टू, हाँ जल्लीकट्टू है। I'm sure not everyone must be knowing this। हाँ साउथ में होता है। हाँ, जैसे स्पेन में भी वहाँ के कोर्ट ने काफी उसको प्रोहिबिट करने की कोशिश करी, रोकने की, बट वो नहीं होता। सेम फॉर इंडियन ऑल्सो, सुप्रीम कोर्ट ने काफी बैन लगाने की कोशिश करी बट होता नहीं है वो, बिकॉज यू कांट स्टॉप पीपल ऐसा। देन वी टॉक अबाउट टोमाटीना, आई गेस एवरीवन नोज दिस, बुन्योल में मनाया जाता है। तो यू शुड नो वेयर इट इज सेलिब्रेटेड मोस्टली बिकॉज रेस्ट अदर थिंग्स यू कैन राइट कि उसमें ये होता है वो होता है। द मेन थिंग यू शुड बी नोइंग इज द प्लेस वेयर सेलिब्रेटेड एंड व्हेन इट इज सेलिब्रेटेड एंड व्हाई। ये 3 चीजें पता होनी चाहिए। वैसे तो ये जो अब कहानी है टोमाटीना की वो है कि वो एज अ फाइट स्टार्ट हुई थी बिटवीन 2 गैंग्स, समझ रहे हो? स्टार्ट वैसे हुआ था बट ये एक फेस्टिवल ही बन गया। पिस्टल से मारना चाहिए था उन्हें, टमाटर से क्यों मार? वह टमाटर पड़े होंगे, टमाटर का रेडियो होगा आसपास ऐसा। ओके हाँ मतलब ठीक है। सो दिस वुड बी इट फॉर टुडे। अब जो बचा है एक बार वो खुद पढ़ लेंगे एंड देन फ्रॉम टुमारो लेट मी चेक टुमारो या फिर व्हेनेवर, अगर वो ऐसे ब्रेक करके हमको खुद स्टार्ट करते दोबारा, बिकॉज आई थिंक यू नीड टाइम टू स्टडी एट होम। वी आर जस्ट टेकिंग अ लॉट ऑफ इनपुट पढ़ नहीं रहे हैं आप लोग। सर ये वीकेंड अगर ब्रेक मिल जाए तो बेटर रहेगा। लेट मी आस्क, या फिर एक दिन रख लेते हैं सैटरडे को, कल ब्रेक लेके सैटरडे रख लेते हैं फिर संडे, ऐसा कुछ लेट मी आस्क है, ठीक है? एंड देन आई लेट यू नो, आई गेस वो फिर मेल ही आ जाएगा या फिर जो भी होगा। क्लियर? पॉसिबल हो तो अल्टरनेट डे पर अगर क्लास होना तो बेटर है। ये एक डे रिवीजन के लिए let's see, I'll just put the point across and let's see what happens. थैंक यू।